Hello, good evening, guys. My voice is audible to you guys? Guys, please type in the chat box. My voice is audible or not? Good evening, all of you. Please join as soon as possible. Today, most important topic we will discuss. One thing we also have left out tomorrow's, that is relation between E and G, and one more thing. Good evening, King Sujit. Tomorrow, one more thing we left, that is relationship between E and G, and before that, also one thing I have left. You should have told me or commented in the box. Okay. Tomorrow what we left, it is relationship between E and G, and one more thing, we previously solved some problems. आमे किछिटा problem solve करथिलु कोन ना deformation of body due to application of load. आ गोटे जिनस आमे छाड़ी देथिलु पिले ना deformation of body due to self weight. एटा भी बहुत जगह रे काम देबो तुमको हैला, problem solve करिया पे काम देबो. सो आज आमे स्टार्ट करिवा पिले कौन तो सिलेबस अनुसार जाओ. सिलेबस गोटे हार्ड कॉपीटा मैंने काढ़ी रख से हिसाब से पढ़ा. तो डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन थ्री इलास्टिक कांस्टेंट आमर हो जाए. एबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आम पढ़ देजे. आज पढ़ा स्ट्रेसेस इन कंपोजिट सेक्शन. ता आगु गोटे पार्ट छाड़ देती मुझे पढ़ेबी तुमको. ओके, तो कॉपी पेन नहीं कि रेडी हो जाओ. 30 seconds देली तापर हमें स्टार्ट करिवा. ओके, प्लीज जॉइन सून. Okay guys, okay, let me start my cell phone. So 30 seconds is going to over now, and finally we'll start our today's class. Okay, okay. So good evening everybody. मुर्मू PM ऑफिशियल किए एटा नाटा लेख, पूरा ना लेख बाबू. मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट तुम पिला मुझे जानली पूरा नाटा लेख, कथा हवा आ डिस्कस करवा. ओके, तो आमे आगरू आज डेट केते पिले, आज डेटा हूँ बोधे 17/8/2022, 17th August 2022. Today's topics to be followed कौन कौन topics to be followed. फर्स्ट टॉपिक है तुम जोटा आम फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट आग रखा सेटा हूँ कौन डिफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी कौन ड्यू टू सेल्फ वेट. प्रसंजीत गिरी, गुड इवनिंग. ड्यू टू सेल्फ वेट. ओके, या कंपेरिजन रे एटा हमें पढ़िनु. वी हैव नॉट रेड दिस. यार गोटे छोट डेरिवेशन टे अच्छी, मु करेबी एबे. ता आगरू आमे कौन व्हाट वी हैव रेड, we have read what? We have read the we have covered what? Deformation of a body due to what?
force acting on it এটা আমি কভার করেছি ওকে this we have already covered जो यार फॉर्मूला कौन थिला ना the deformation कौन del L in terms of length तरह that is PL by AE okay এই ফর্মুলা ইউজ করি আমি প্রবলেম भी সলভ করিছে ओके सो एबे हमें कवर करिवा कोटा हमें ये पड़िबा एटा आगो डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी ड्यू टू सेल्फ वेट ओके तो पढ़ा तो डायरेक्ट डेरिवेशन को कौन कहूची हेडिंग दे देवा येलो पेन दे देवा कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ स्टूडेंट्स कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ डोंट स्किप द कलर्स सो deformation of body due to self deformation of body due to self weight okay एदा हला आजिर आमर हेडिंग ओके just a minute so तमे लेख कौन ना आगे आम गोटे डायग्राम गोटे करदवा ब्लू पेन रे करबा डायग्राम इज लाइक दिस सपोज दिस इज द फिक्स्ड एंड ओके दिस इज द फिक्स्ड एंड तापरे एटी गोटे बीम गोटे लागि छि गोटे स्ट्रक्चर गोटे लागि छि ओके एमटी गोटे कैंटिलीवर धर अपवर्ड डाउन कैंटिलीवर अछि एटा होछि पॉइंट ए एटा होछि पॉइंट बी यार सपोज लेंथ होछि यार सपोज लेंथ होछि एल ओके यार होछि लेंथ एल ओके तो आमे कौन करिवा डेरिवेशन पाई यार गोटे स्मॉल स्ट्रिप टाइप कंसीडर करिवा आउ ताकू आमे इंटीग्रेट करिवा फ्रॉम 0 टू एल बाउंड्री कंडीशन पुट करी जोटा फिक्स रहबो आउ तार लेंथ कोन एल सेटू आमे ताकू इंटीग्रेट करिवा डेरिवेशन इंटीग्रेशन जानि जो फिर भी मु बतै देबी केमती कोन फार्मूला सिंपल इंटीग्रेशन बेसी हार्ड नहीं तो यार जो छोटो एलिमेंट रो थिकनेस कोन होची ना dx ओके आउ डी यार ए थिकनेस रो लेना होची dx ओके आउ a to from this to this point the distance is what x okay the distance is x okay so this is our desired figure so now write the terminologies or write the we can say our language also मैं लिखो यदि डेरिवेशन पड़ी गला दरका लिखो ना consider a bar AB hanging कौन freely दे सॉरी गाइस एटा फ्रीली हबो हैला hanging freely माने फिक्स करी के रखा है तावना से हैंग करूची फ्रीली अंडर कौन अंडर इट्स जा हमर तार कौन हेडिंग ता अछि अंडर इट्स ओन वेट ओके ओन वेट ओके एति लिखिला तापर लिखि दियो तो माने टर्मिनोलॉजीज लिखि दियो एबे टर्मिनोलॉजीज लिखि दियो ना L इक्वल्स टू कौन लेंथ of the bar okay L होची कोन लेंथ ऑफ द बार तापरे A होची आई थिके जल्दी कर पले इलेक्ट्रिकल क्लास भी अछि से हिसाब रे हमें टिके मोसे जल्दी जल्दी लिखो क्रॉस सेक्शनल एरिया
of the bar. Okay, cross sectional area of the bar. तापर इटा तो हमें जानी जो कौन यंग्स मॉड्यूलस फॉर कौन दी बार मटेरियल यंग्स मॉड्यूलस फॉर दी बार मटेरियल आउ डब्ल्यू टा होजी कौन ना स्पेसिफिक weight of the bar material. Okay, specific weight of the bar material गला तापरे जहाँ कहली से लिखी दियो ना. now consider a small section dx. now we लिखो now we consider a small section dx. Okay, dx of a bar or a hanging bar at a distance x जेमती ड्राइंग करी x from point b. Okay, so एबे हमें कौन जानी जे वेट कौन हम ना तार वेट कौन हो फॉर द वेट ऑफ द बॉडी और द टोटल लोड सहित आम इक्विवेलेंट करवा ना तार लेंथ थ्रू आउट द लेंथ फ्रॉम दैट सेक्शन एक्स कौन हो लेख गोटे पॉइंट ना वेट ऑफ the bar for a length of x. ठीक अच्छे एति तो एटा को हमें केमती रिप्रेजेंट करि परिबा स्पेसिफिक वेट नहीं थिलु सो p इक्वल्स टू कौन w a into x हबो कि नहीं हला. सो एलोंगेशन कौन हो आम पाखे प्रीवियस रिलेशन अच्छी ना आम पी टाक इन टर्म्स ऑफ वेट एरिया एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी लिखिले. ओके सिंपल आउ किछि नहीं. तो आम प्रीवियसली आम जानी कौन स्मॉल सेक्शन रो एलोंगेशन आम जदि नबा आम एलोंगेशन लिखि दियो एलोंगेशन ऑफ स्मॉल सेक्शन तो यार कौन हो फॉर्मूला आम कौन जानी ना PL by AE. PL by AE PL टा P टा कौन है ना WAX आउ L टा कौन है ना द कौन द डिस्टेंस और द थिकनेस ऑफ द एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट dx. ओके तो एटा को हमें केमती लिखिला PL by AE. तो एटा को फर्दर हमें केमती लिखि परिबा W x dx ता ब्रैकेट रे a गुडा कटि जीवो बचिला कोन e. ठीक अछि एमती लिखिले. नाउ सो टोटल एटा गोटे स्मॉल माने स्मॉल थिकनेस स्मॉल पार्टिकल रो एलोंगेशन हैला. ठीक अछि ताले बे तार इंटीग्रेशन करले हमें टोटल बार रो एलोंगेशन ला पाई दिबा कि नहीं. तो सीधा हमें लिखि दियो कोन ना total elongation will be that is del L equals to integration from सीधा लिखो एठी गोटे पॉइंट दे कि ना total elongation of bar we will get by integrating from 0 to L by putting the boundary conditions. So the W into x dx by e देखो एठी बुझिवा जिनस अछि पिले एठी W टा होची गोटे कांस्टेंट टर्म आ e टा गोटे होची कांस्टेंट टर्म. तो इंटीग्रेशन करथिबो जदी तुम जानथिबो आमे केमती करथले कांस्टेंट टर्म गुडा को बाहर को नहीं आसथिले
তাহলে ইন্টিগ্রেশনটা কেমতি হবো w বাই ই ইন্টিগ্রেশন ফ্রম 0 টু l বাকি রহিলা কোন x dx সো x ର ইন্টিগ্রেশন আমি কোন জানিছে পিলে x ର ইন্টিগ্রেশন হউচি x স্কয়ার বাই 2 তো এটি w বাই ই ওকে w by e hela w by e that is sorry implies hobani ethi we are writing in terms of this so w by e into x square x integration x square mane x square n to the power n plus 1 by x to the power n plus 1 by what n plus 1 so 1 amar n kono 1 so 1 plus 1 2 n plus 1 n होची 1 so 1 plus 1 2 so eta x square हे जिवो eta हे जिवो x square by 2 integration from कोन lower limit 0 upper limit l एमति लिखि देई परिबा हमें ओके एटा लिखिले ताले एबे कोन लिखि परिबा ना del l equals to कोन हे जिवो देखो x जगह रे थरे 0 पुट करिवो तो कोन एटा 0 by something 0 हे जिवो बाकी l पुट कर जो डायरेक्टली तमे दैट इज आगो l पुट करो l पुट करले कोन हबो w l स्क्वायर बाय 2e w l स्क्वायर बाय 2e 0 पुट करले तो 0 हे जिवो ओ लिखि दे फेरबे 2 into x जगह रे 0 0 स्क्वायर बाय 2e तो ए टर्मटा 0 हे जिवो ओके बाकी रहिला कोन हम पाखरे del l equals to w l square by कोन 2e ओके एटी की रहिला एटा रहिला तो एटा को हमें कोन परे सिंपलीफाई करी कि लिखि परिबा कि नहीं केमति लिखिबा हमें टोटल वेट कोन जानि छे एटी गोटे देयरफॉर मार्क दे की लिखो ना ए एक्सप्रेशन यूज करी कि एटा स्मॉल w हैला this w is small w specific weight this is the specific weight but we know the total weight this is the total weight देखो टर्म गुला देखो total weight रो एक्सप्रेशन कोन होची small w a into l तो एटा केमति लिखि हबो w डायरेक्टली हमें लिखि परिबा कि नहीं केमती लिखो ना del l equals to कोन कैपिटल w देखो w स्मॉल w a l ओके तो इन टर्म्स रे हमें केमती लिखि परिबा कैपिटल w l बाय डिवाइड कर दियो 2 into a into e ओके सो এটা আমার ফাইনাল এক্সপ্রেশন ওকে সো यार তাহলে গোটে পয়েন্ট ইনফারেন্স করি কি লিখি দিও কোন দিস ইজ आवर ফাইনাল এক্সপ্রেশন এন্ড দিস ইজ व्हाट the total weight okay total weight এটা এরিয়া এটা यांश মডুলাস আর এলটা হচ্ছে ये তোমার লেন্থ ओके सो एठी लिखि दियो सो एठी पॉइंट लेखो गोटे फ्रॉम दी above result कोन we find that the deformation of the bar due to its own weight is kono এটা ইন্টারভিউ রে পছন্দ is equal to half of the deformation okay comma degi if the
same body, if the same body is subjected to a direct load equal to the weight of the body. ओके एतिकी लिखिला एटा लिखि दियो तापर आकु पढिबा हमें एतिकी लिखि दियो आगो तो आम स्पेसिफिक वेट रो कौन डेफिनेशन रो कौन जानी छे ना लोग स्पेसिफिक वेट डाउट क्लियर हो जिवो तमरो ना स्पेसिफिक वेट कौन इट इज द यूनिट वेट और weight per unit volume of a material हला कंफ्यूज होवनी सेटा कैपिटल W टा होची तमरो कोन कैपिटल W टा होची एटा होची टोटल वेट एटा होची टोटल वेट आउ एटा होची स्पेसिफिक वेट ओके हला तो गोटे सिंपल प्रॉब्लम गोटे लिखि दियो गोटे प्रॉब्लम गोटे लिखि दियो पिले प्रॉब्लम गोटे लिख क्वेश्चन होची से बार टाइप रो क्वेश्चन करिवा हमें बार टाइप रो क्वेश्चन टिके ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है क्वेश्चन फिर भी ट्राई करो ये क्वेश्चन जल्दी कर दबो बाकी सब क्वेश्चन तुम करि परिबो ओके सो ट्राई करो क्वेश्चन दे लिखो क्वेश्चन टा लिखो पिले क्वेश्चन टा लिखो गुड इवनिंग एमके गुड इवनिंग क्वेश्चन टा लिखो क्वेश्चन टा होची आगे फिगर ड्रा कर दो आगे फिगर ड्रा कर दबा येलो पेन फिगर फॉर क्वेश्चन ओके सो ड्रॉ द फिगर Let's see a steel wire ABC 16 meter long having cross sectional area of 4 mm square weighs 20 Newton. If modulus of elasticity of the wire material is 200 gigapascal, find the deflection at C and D. Okay, C and B. Okay, so question टा लिखि दिया डायग्राम टा होची एमिति okay diagram ta hochi this is point A this is point B and this is point C okay so A to B देइछि हमरो केते 8 मीटर यूनिट देखो 8 मीटर आउ B to C भी देइछि कोन केते 8 मीटर यूनिट देखो हैला यूनिट देखो B to C भी देइछि 8 मीटर ओके तो एटा गोटे हिंज टाइप रो देइछि कि कोन देइछि हिंज ही देइछि हैला एटा वन टाइप ऑफ पिन जॉइंट ओके दिस इज वन टाइप ऑफ पिन जॉइंट और हिंज वी कैन से ओके हिंज माने बुझी पाछो तो गोटे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दिटी आको तार मूवमेंट रहबो ओके नाउ सो क्वेश्चन टा लिखि दियो क्वेश्चन टा अछि ना a
steel wire ABC ABC wire केते ना 16 मीटर लॉन्ग having देखो क्रॉस सेक्शन अच्छी having कौन ना क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 4 mm स्क्वायर देखो यूनिट देखो मीटर 80 mm स्क्वायर केते वेज क्वेश्चन देछि वेज 20 न्यूटन ओके 20 न्यूटन if the modulus of elasticity for the कौन वायर सॉरी स्पेलिंग टा भूल गला WIRE वायर कौन मटीरियल is 200 gigapascal okay is 200 gigapascal then find the deflections at C and B okay C और B रो डिफ्लेक्शन फाइंड करो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइम रे मु कोन कहि फर्स्ट कोन लिखिबो डेटा गिवन रही 1 मार्क मिली जाय पिले हला डेटा गिवन जदी तमे लिखि के आसीबो ताले 1 मार्क पाई दिबो ताको डेटा गिवन टा लिखि दियो एटलीस्ट तमे अप्रोच भी लिखि देबो तो यू विल गेट द हाफ मार्क्स ओके सॉल्व केमती करबा देखि दियो आ जदी जे सॉल्व करी से आंसर टा को पोस्ट करो कमेंट बॉक्स रे पोस्ट करो चैट बॉक्स रे पोस्ट करो ओके देखो डेटा गिवन कौन देछि ना सॉरी डेटा गिवन कौन देछि डेटा गिवन देछि गिवन और डेटा गिवन इज व्हाट लेंथ इक्वल्स टू केते 16 मीटर एटा डिनोट करबा कोथरे एल रे 16 मीटर ले केते हला 16 into 10 to the power 3 mm कहिछि एसआई रे करबो सब समान यूनिट करबो ताले ठीक बारियो नले सब भूलभाल हबो ओके तो क्रॉस सेक्शनल एरिया केते देछि लिखि दियो क्रॉस सेक्शनल एरिया केते A is equals to केते A is given as 4 mm स्क्वायर माने बहुत कम लेंथ हिसाब रे बहुत कम एरिया ओके कौन कहि ना स्टील बार ABC 16 मीटर लॉन्ग हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 mm स्क्वायर वेज 20 न्यूटन माने 20 into 9.8 तार वेट है जीवो ओके सो कौन हला तो वेट ऑफ द वायर देइ जी केते वेट ऑफ द वायर देइ जी केते वेट ऑफ द वायर मेटल केते देइ जी 20 न्यूटन ना सो एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या को आउ मु ये करके लिखिनी और लिखि दो जी यंग्स मॉड्यूलस ओके यंग्स मॉड्यूलस केते 200 गीगापास्कल देखो 200 गीगापास्कल को केमती लिखिबा हमें 200 into 10 to the power 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर ओके गला एतिकी हला परे हम फर्स्ट काढिबा कोन डिफ्लेक्शन एट सी पूरा एंड पॉइंट रे डिफ्लेक्शन काढिबा केमती हमें डेरिवेशन टा यूज करो हमें तो जानि छे ना कि एंड पॉइंट रे हमर फार्मूला टा कोन अछि एंड पॉइंट रो हमर फार्मूला टा कोन होजी जो लास्ट 0 to l रो यूज करके जो काढुतिले ता पई फार्मूला कोन थिला del l रो कोन थिला डायरेक्टली फार्मूला पुट द फार्मूला गेट द आंसर कोन ना डिफ्लेक्शन एट एटा को लिखि दियो c ओके पॉइंट c कोन हो जीवो ना टोटल वेट ऑफ द बॉडी इनटू l
फॉर्मूला थिला ना एंड पॉइंट रे सेति पे देखो क्वेश्चन भी देई से हिसाब रे इंडिकेट करिके एटलीस्ट यू विल डू द वन पार्ट इफ यू डोंट गेट द बी पार्ट ओके सो W कैपिटल W टोटल वेट ओके इज इक्वल्स टू केते केते हे जिवो 20 into 16 into 10 to the power 3 हैला by 2 into cross sectional area केते 4 mm square तो किसी लेके दरकार नहीं into 200 into 10 to the power 3 आंसर को केते हबो आ यूनिट टा भी लिखिबो ओके एटा कहबो आंसर तापरे देखो क्वेश्चन फिगर टा को देखो फिगर रे कोन अछि ना गोटे पॉइंट बी टा होची सेंटर पॉइंट टा ना ए हाँ बी टा सेंटर पॉइंट आउ सी टा तमर एंड पॉइंट तो यार डिस्टेंस केते देछि 8 8 ओके 8 8 देछि तो एटा तमर सेंटर पॉइंट ना सेंटर पॉइंट दिस इज द सेंटर पॉइंट सो 80 ए पैरामीटर गुडा को केते 80 बॉडी वेट केते हे जिवो हाफ हे जिवो W/2 आउ 80 लेंथ केते L/2 ओके तार लेंथ भी अच्छी वेट भी अच्छी ताकू खाली पुट करो फार्मूला रे आ आंसर बाहरी जीवो सीधा सीधा सो कोन डेल एल कोन डेल एल एट एटा एटा आगे बाहर करो तापर हमें दीटे जाको को मिसे की बाहर करबा टोटल डिफ्लेक्शन ता केते हला ओके सो एटा बाहर करलो केते बाहरु जी फास्ट ता केते बाहरु जी फास्ट ता केते बाहरु जी ठीक अच्छी 0.2 mm ओके 0.20 mm सो इठी गोटे पॉइंट बुझीबार अछि कोन ना देखो द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी कोन द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी कंसिस्ट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ वायर ऑफ AB ओके दिस इज द पॉइंट A and this is the point B and this is the point B so deflection point B रो deflection का कंसिस्ट करूची AB रो deflection ता कंसिस्ट करूची ऑफ सेल्फ वेट रो ओके प्लस कोन deflection ऑफ BC रो भी तो धरुची ना से BC रो भी तो धरुची ना तो ताथिरे भी करी के हम बाहर करी परिबा ताथिरे भी करी के हम बाहर करी परिबा एटा हैला वन पार्ट दिस इज वन पार्ट ओके टोटल डिफ्लेक्शन काढिया पय हमकु काढिया को पड़िबो केमती एटा को हम धर लिखि दबा डिफ्लेक्शन ऑफ L1 ड्यू टू L1 तो कोन हो जेबो W/2 इनटू कोन L/2 ओके L/2 by 2 into A into E सीधा सीधा पुट कर दियो एटा केते 10 हे जीवो एटा केते हे जीवो L ता केते 16 टोटल लेंथ केते 16 by 2 करले केते 8 into 10 to the power 3 ओके 10 to the power 3 रो हाफ करबनी 8 16 रो हाफ करबो ओके तापरे 2 एरिया तो समान 4 into E भी समान 200 into 10 to the power 3 10 to the 3 10 to the power की काटी दियो केते 8 8 कटि गला केते रहिला 10 by 200 पाखा पाखी आसुची 0.05 कोन mm दिस इज इक्वेशन नंबर 1 ओके हला एति गला एबे नेक्स्ट पॉइंट पळे आसो पहिले नेक्स्ट पॉइंट पळे आसो देखो एबे AB रो बाहरिला ड्यू टू वेट ऑफ AB प्लस BC रो किंतु एट पॉइंट B बाहर करिबा ड्यू टू द वेट ऑफ BC ओके तो सेठी भी तो हाफ ही वेट पड़िबो ना समान समान वेट पड़िबो ताले केते बाहर छु देखो देखो सेठी केमिति हबो देखो सेठी 2 मल्टीप्लाई हबनी ओके सेठी हमें होल सेक्शन ता कंसीडर करूनु काहे कि ऊपर सेक्शन ता कंसीडर करले हमें होल सेक्शन ता कंसीडर करदलु सेति पय 2 मल्टीप्लाई होतिला बट एठी 2 मल्टीप्लाई हबनी हाफ हे जिवो माने बाय 2 डिवाइड हे जिवो टोटल जिंसरो ओके सो फार्मूला ता हमर कोन हे जिवो del L2 इक्वल्स टू कोन सेई
डेल फॉर्मूला कौन हो W by 2 into L by 2 by, will not multiply 2 here, but the other terms will get how much? 8 into 10 to the power 3 by 4 into 200 into 10 to the power 3. 10 to the power 3 cancel. This is 2. 20 by 200, that will come out to be 0.1 mm. Okay, this is equation number 2. Okay, এটা হলা. So total deflection of wire at B बाहर करछु ना हमें. देखो आउ थरे कहूँ तुमको, देखो एठी B जेतेले बाहर करथुलु AB पॉइंट कंसीडर करथुलु, किंतु AB जेतेले एई पॉइंट रे AB जेतेले कंसीडर करछु माने होल टा कंसीडर करछु, सेति पई हमें फार्मूला टा कोन यूज करले कोन 2 W/2 into L/2 ए डिस्टेंस में कंसीडर करछु ना, किंतु वेट तो पूरा रो वेट टा हमें कैलकुलेट करबा. सो W/2 L/2 2 into AE फार्मूला जहा अछि हमरो, किंतु पॉइंट B when only we are considering BC. Okay, we are considering only we are considering here only BC. Okay, we are only considering weight of only BC, weight of BC हैला. बट एठी कोन एठी ए पॉइंट रे कोन होबो, ए पॉइंट रे दिस पॉइंट रे बोथ weight of AB self weight plus BC रो भी weight हैला. So both the weights will be considered. Okay, एटा होची मेन पॉइंट, इन्फरेंस पॉइंट. ओके, सो टोटल डिफ्लेक्शन एट B एटा L हैला, एटा L. सो टोटल एगोडा में डिफ्लेक्शन एट B काटजे ना. दिस वी आर फाइंडिंग द कोडा गला, दिस इज द पार्ट फॉर टोटल डिफ्लेक्शन एट B पॉइंट ओनली. आइटा C पे हमें काट देई छ ऑलरेडी फार्मूला पुट करी. ओके, सो कोन हो जिवो टोटल deflection at total deflection of wire at B कौन है जीवो 0.05. तापर पर आंसर वाला लिखी चलो. at B कौन है जीवो ना delta LB equals to del L1 plus del L2. Okay, that is equals to 0.05 plus 0.1 केते हला 0.15 mm. क्वेश्चन रे मांगी थिला कोन ना हमको डिफ्लेक्शन एट B. सो कोन हमें लिखि देबा, that is deflection at B equals to केते 0.15 mm. ओके, एरा हला. and deflection at point C कहते throughout the all total weight of the body कहते है जीवो 0. कहते बारी जी 0.2 mm माने 20 mm. ओके, सॉल्व गला. এই প্রবলেমটা করিব, এই প্রবলেমটা করিব. ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম পড়ি পারে সেমিস্টার রে. আউ বহিরু কিটা প্রবলেম দে দেবি সেগুলা করিব হলা. एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करिकी तो हमें प्रॉब्लमटा करिने तो ताहु चलो तार प्रॉब्लम करिबा. ता आगरु हमें टिके कंपोजिट सेक्शन रो टॉपिकटा पढ़ देबा आ प्रॉब्लम करिबा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करिकी. ठीक अछि, तो कोन ना वेरिंग क्रॉस सेक्शंस और चैप्टर ना होची
Chapter name is, a new topic name is what? Stresses and strains in bars of varying sections. Okay, लिख इंट्रोडक्शन तुमको दे दूची बार सेक्शन को टाइप था अगर लिखी दियो तो माने टाइप्स ऑफ बार सेक्शन खाली लिखी दियो रेटा तापरे तार हमें पढ़िबा हला सो types of bars of varying sections कौन कौन से नंबर 1 लिखो नंबर 1 लिखो bars of different sections गोटे गला तापर लिख नंबर 2 टैपर माने जानते तो लेथ रे काम करते टैपर माने जानते तो बार ऑफ यूनिफॉर्मली टैपरिंग सेक्शंस हला तापर नंबर 3 लिख बार ऑफ composite sections. Okay, step by step जीवा ओके तो लिखिल ताम सिलेबस टा कौन अच्छी रो मुझे देखी दिए सिलेबस रे खाली दे तुमर स्ट्रेसेस इन कंपोजिट सेक्शन है स्ट्रेसेस इन कंपोजिट सेक्शन खाली दे तो यही जिनस अच्छी तमें मु तुमको स्ट्रेसेस इन बार ऑफ कंपोजिट सेक्शन टा खाली पढ़ेबी ओके बाकी दादा तुम सिलेबस रे नहीं फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम गुड़ा टिके टिके देखी देथिबो ओके तापरे आमे आकु बढ़िबा ये आगर कोन गोटे छाडली तुमको कहबी कहउतली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करके दीटा गोटे प्रॉब्लम करबा हां चले आगे एटा टिके पढ़ दबा तापरे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करके आमे प्रॉब्लम करिबा त हमर एबे टॉपिक होची बार ऑफ या कोन तुम सिलेबस रे अछि स्ट्रेसेस सिलेबस रे अछि सिलेबस रे कोन अछि ना देइची देखिबा खोलेगी स्ट्रेसेस इन बार्स ऑफ कंपोजिट सेक्शन एटा ही पढ़िबा हमें खाली ओके एटा हम पढ़िबा तो ए जिंस थाए किंतु हमें फोकस करबा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ओके सो टैपर तो नहीं तमरो टैपर नहीं स्ट्रेसेस ऑफ stresses of bar of varying cross section composite section ना so composite माने कौन आगे लिखी दिया तो माने पिला माने composite section बुझिया अगर तुम कौन जानिया को पड़िबो composite विषय ओके so composite टा कौन पिला माने ना composite होची ना it is the combination of two or more material
material homogeneously to perform or behave like a uniform or behave like a single material with different properties adhered, or we can say properties gained from the mixed or used materials. eta mo words re तुमको बताइली. okay, it is the combination of two or more materials homogeneously, okay, to perform or behave like a single material with different properties gained from mixed or used material. हैला एटा भी हेई पारिबो in कोन ना right proportion एमती नहीं कि ताकू मिसई देले आधा किलो ताकू मिसैले किलो और ताथरे बाहरी गला हमर कोन 1.5 किलो रो बनिया गोटे मटेरियल सेमती होबनी. तार गोटे हमकू प्री डिफाइंड वेट करी कि मिसै को पड़िबो ताकि प्रॉपर्टीज गुला हमकू एनहांस्ड प्रॉपर्टीज मिलिबो. ओके, जोटा कि हमरो नीड्स को सैटिस्फाई करिवो. देखो it will satisfy the needs. okay, needs को satisfy करिवो. okay, so देखो composites material कोठी यूज हुए बहुत. देखो आजिकल सिंगुलर मटेरियल एते प्रॉपर्टी प्रोवाइड करि पारुनी, सेति कि हम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करि पारुनी, सेति पय हमें कंपोजिट मटेरियल आड़ को जाउछु, तार आड़ को हमें एज करूछु. देखिबो सेटा ता पय वेट माने वेट ऑफ द मटेरियल भी कमी जाए, वेट ऑफ द प्रोडक्ट भी कमी जाए, माने हीट रेजिस्टेंस हे जीवो, थर्मल माने से थर्मल रिलेटेड तमरो थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल स्ट्रेसेस कमी जीवो. बहुत फैक्टर्स अछि, मु तुमको डीप रे गले बतेइबी. तो एई सब जिंस ऊपर हमें सेति पय फोकस करूछु, सेति पय हमें कंपोजिट मटेरियल आड़ को जाउछु. देखो इकोनॉमिकल भी हे जीवो हला. आउ बड़ लार्ज सेक्शंस हला. देखो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री रे कंपोजिट मटेरियल रो बहुत महत्व अछि, मिलिटरी इंडस्ट्रीज रे बहुत इंपोर्टेंस अछि हला. सेति पय हमें कंपोजिट मटेरियल्स यूज करछु, बहुत जगह रे यूज होछि हला. सो हमरो कोन अछि स्ट्रेसेस इन द बार्स ऑफ कंपोजिट सेक्शंस. ओके, तो हमर सिलेबस हिसाब रे लिखि दियो. तार कंपोजिट बार रो डेफिनेशन ता लिखि दियो. हमें कोन लिखिले ठीक कंपोजिट रो लिखिले, कंपोजिट मटेरियल रो लिखिले. ताले कंपोजिट, दिस इज द कंपोजिट मटेरियल रो लिखिले हमें. equivalent to that, never worry. okay, now लिखि दियो कौन ना कंपोजिट बार रो. कंपोजिट बार लिखो. ओके, कंपोजिट बार रो डेफिनेशन रो लिखो. a bar made up of two or more different materials कौन joined together is a composite bar. हैला तो पॉइंट कौन कहूची बुझीवार पॉइंट होची कौन ना से माने एमती जॉइन हेई थांती joined such that when there will be
extension or compression এটা ইঞ্জিনিয়ারিং ভাষারে লেখা হচ্ছে extension or compression that will act like a single unit or unit compression হবো or extension হবো ওকে hello like a single unit equally कौन आ गोटे जिन लिख ना when subjected to tension or compression okay extension ଆଉ ତମର contraction କେତେ ବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ subject to tension or compression ହବ okay so दीटा पॉइंट मन रखिथिबो कंपोजिट सेक्शंस रो प्रॉब्लम हमें जेतेले सॉल्व करिवा कोन ना फर्स्ट पॉइंट लिखि दियो पिला माने फर्स्ट पॉइंट होची ना एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन जोटा लिखेली of the bar being equal comma देखी the strain that is कौन deformation per unit length is also equal okay now the second point is what na the total external load on the bar is equal to the sum of the loads carried by कौन the different materials okay तो छोटा डेरिवेशन टा अच्छी संग संग कर दवा तापरे आज क्लास एंड कर दवा काली प्रॉब्लम गुडा करिबा ओके काली प्रॉब्लम गुडा करिबा सो लेखो पिले मन लेखो so let us consider a composite bar made up of two different material okay two different materials तो डायग्राम टा कर दियो एकदम फटाफट डायग्राम टा कर दियो अरे जरा ताती पे चली को वो पड़ा डायग्राम टा कर दियो सारे ओके सो एटा हे गला वन कंपोजिट मटेरियल एटा हे गला सेकंड कंपोजिट मटेरियल एटा जेते जॉइन कर देले एटा हे गला सिंगल मटेरियल या पर लोड पडुची p ओके आउ यार लेंथ होची l ओके लेंथ होची l देखो एठी मु कहि दउची p टा होची कोन तमरो टोटल लोड ओके l टा होची लेंथ a1 एटा सेक्शन 1 दिस इज 2 a1 टा होची एरिया ऑफ सेक्शन 1
area of bar 1, area of bar 1, A2 area of bar 2, okay, E1 होची Young's modulus Young's modulus of 1 तापरे E2 होची Young's modulus of 2, okay, आउ P टा होची total load, आउ P1 टा होची load shared by section 1, okay, आउ P2 टा होची load shared by section 2, okay, एटा लिखि दिया, लिख लो. नाउ आमे कौन जानी छे ना आमे जानी छे we know हिजबो simple strain in the bar कौन हिजबो sigma 1 E1 एटा को हमें केमती लिखि परिबा ना P1 by A1 E1, okay, एमती लिखिले. now एटा को दे दियो कौन तो माने this give as equation number 2, okay, this one give as equation number 2. now similarly in bar 2 कौन epsilon 2 हो कौन sigma 2 by E2 equals to P2 by A2 E2, P2 by A2 E2, okay, हैला एमती हे गला. सो आ गोटे जिनस हम एटी छाड़ देले कौन छाड़ देले ना एटा को टिके रुहो एटा को हमें इक्वेशन 2 न देगी एटा को हमें फर्दर लिखि परिबा कि नहीं एटा को फर्दर लिखि परिबा केमिति एटा तो स्ट्रेन हे गला तो चेंज इन लेंथ 1 डेल एल कौन हो जिवो एप्सिलॉन 1 into L सीधा लिखि देबो P1 L1 ना P1 L into A1 E1 एटा को दे दिया तो माने पिले equation 2, okay, this you give as equation number 2. similarly एटा को हमें सेमती भी लिखि देबा कोन ना del L2 equals to एटा को मिटा को पड़िबो हमकु del L2 equals to epsilon 2 into L, epsilon 2 into L ताले एटा कोन हे जिवो P2 L by A2 E2, okay, हे गला. लिखिलो से yes or no, okay, तापरे तीन एटा कोन इक्वेशन नंबर दे दियो तमे 3, ओके, तापरे नेक्स्ट पळे आसो निरिके द्वितीय कृष्ण सामल. नाइस सर, ठीक अछि, थैंक यू. एबे नेक्स्ट चलो सिंस देखो एठी बोथ हमर दीटा देखो एलोंगेशन कि नो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 both are elongation, so दीटा को इक्वेट कर देबा हमें कोन P1L by A1 E1 equals to P2L by A2 E2, और हमें लिखि परिबा सॉरी गाइस, और हमें चला और हमें लिखि परिबा एटा को कोन ना LL कॉमन आसी गले P1 by A1 E1 equals to P2 by A2 E2, ओके, एति लिखि परिबा. सो
आम इन टर्म्स रे लिखिले P2 इक्वल्स टू कौन लिखि परिबा ना P1 बाय ना P1 इंटू लिख A2 E2 बाय A1 E1 ओके लिखि परिबा लिखिला से हिसाब रे कौन बट आम कौन जानी छु बट वी नो दैट आगर गोटे इक्वेशन लिखी ना इक्वेशन नंबर 1 दैट इज P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 सो P2 को हमें रिप्लेस करके लिखी परिबा कौन P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 जगह P1 इंटू A2 E2 बाय A1 E1 ये वैल्यू गुड़ा तुमको देइथिबो क्वेश्चन रे हला खाली पुट द फार्मूला डेरिवेशन जानी देथा फार्मूला जानी देथिबो डायरेक्ट पुट करिवो बाहर कर चलिवो ओके सो एटा को हमें डायरेक्ट लिखि परबे कोन कॉमन नहीं जीवा कॉमन नहीं जीवा केमती P1 कॉमन नहीं गेले P1 कॉमन नहीं गेले कोन हबो 1 प्लस A2 E2 बाय A1 E1 P1 कॉमन नहीं गेला है गेला तो एटा को हमें केमती लिखि परिबा फर्दर केमती लिखि परिबा प्योर मैथमेटिक्स P1 into A1 E1 plus A2 E2 by A1 E1 ओके हैला लिखिले एमती लिखिले सो दैट इज इक्वल्स टू P हैला तो ताले P1 केते ताले P1 केते P1 केते P1 इक्वल्स टू किसी नहीं टर्म टाकू ये कर दियो P इंटू A1 इंटू E1 बाय A1 E1 प्लस A2 E2 हैला एटा हे गला P1 हमको मिल गला लोड कैरेड बाय फर्स्ट बार सिमिलरली सेम फार्मूला हवा कौन पाई P2 पाई ओके सो P2 पाई लिखि दियो इन टर्म्स ऑफ P2 कौन ना P इंटू खाली A1 E1 जगह रे A2 E2 बाय कौन A1 E1 प्लस प्लस A2 E2 सिमिलरली सेम प्रोसीजर ओके हैला तो एई दिटा फार्मूला होची वेरी वेरी इंपोर्टेंट गोटे मन रखियो दिटा को आराम से लिखि परिबो ओके सो एबे हमें स्ट्रेस देखो स्ट्रेस रिलेशन तो हमें कौन जानी डायरेक्ट हमें जानी लिखि दो डायरेक्ट लिख ना P1 बाय A1 E1 इक्वल्स टू कौन P2 बाय A2 E2 जानिए कि नहीं एटा हमें जानिए सो वी कैन राइट P1 बाय A1 कौन सिग्मा 1 बाय E1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 बाय E2 सो एठू हमें डायरेक्ट लिखि परिबा कौन एडी साइड लिख अलगा पेन लिखि दउची कौन सिग्मा 1 is equals to एडो सिग्मा 1 is equals to सिग्मा 2 into E1 by कौन E1 by E2 सिमिलरली कौन सिग्मा 2 is equal to इन टर्म्स रे E2 by कौन E2 by E1 into सिग्मा 1 हे गेला सो कौन ताले आमे कौन फाइंड करि परिबा ना फाइनल हमारा इक्वेशन होची फाइनल इक्वेशन होची कौन फाइनल इक्वेशन होची ना वी नो दैट P is equals to से ऊपर इक्वेशन P1 प्लस P2 तो हमें सबको लिखि परिबा कौन सिग्मा 1 A1 प्लस सिग्मा 2 A2 ए टर्म्स सब जिंस रिलेटेड स्ट्रेस स्ट्रेन सेति पई रिलेटेड नाले किछि बुझी परिबनी सब मुंड ऊपर पार हो सेति पई रिवीजन दरकार
That's why revision is necessary. Okay, ହେଲା लिखिले पिला माने चैट बॉक्स रे टाइप करो, चैट बॉक्स रे टाइप करो, नले कौन करूच मुझे जानी पारुनी। अच्छा गोटे छोट प्रॉब्लम टे लिखि दियो, आज क्लास एंड करिबा काली प्रॉब्लम्स ऑन कौन स्ट्रेसेस इन बार ऑफ कंपोजिट सेक्शन रो करिबा। ओके कहार प्रॉब्लम हमें करिबा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रो प्रॉब्लम गोटे लिखि दियो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रो प्रॉब्लम करिवार अछि। गोटे सिंपल प्रॉब्लम टे लेखो, एटा मु तुमको बतै दउती। ओके यार प्रॉब्लम पड़े, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रो प्रॉब्लम निहाती पड़े 5 मार्क्स हला, 5 मार्क्स ना 8 मार्क्स तमरो जो मिडिल मार्क करे 2 मार्क पर जति की जो नेक्स्ट 4 मार्क की 6 मार्क की 5 मार्क अछि तातिरे क्वेश्चन पड़े, पूरा थुआ पड़े क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो ना आ स्टील बार, क्वेश्चन लिखो अ स्टील बार ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया केते देछि धरा 200 mm क्यूब इज लोडेड। फिगर अछि, फिगर ता करिबी कोन कहिछि फाइंड दी चेंज इन लेंथ ऑफ दी बार। आ कौन कही टेक ई इक्वल्स टू 200 जिगा पास्कल, सेटा हमें लिखु कौन 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर है एदिके लिखु तो इन टर्म्स ऑफ मेगा पास्कल। ओके नाउ सॉल्यूशन ऊपर को पळे आसो, सॉरी फिगर ऊपर को पळे आसो। फिगर कौन देछि वेरिंग क्रॉस सेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कौन देछि एटा होछि तमरो सेंट्रोइडल एक्सिस और न्यूट्रल एक्सिस। ओके एबे कलर टा टिके चेंज कर देबा, सुंदर करिवा। तो एठी देछि लोड देछि 30 किलो न्यूटन, एटा सेक्शन होछि बी, ए सेक्शन टा होछि ए, ए सेक्शन टा होछि सी, आउ ए सेक्शन रे लोड देछि 50 किलो न्यूटन। देखो एठी सबुठु इंपोर्टेंट खेल है, आउ ए सेक्शन रे लोड पड़छि केते 20 किलो न्यूटन। ओके बी रे पड़छि लोड, सी रे 30 किलो न्यूटन टेंसाइल पड़ुछि, 50 किलो न्यूटन टेंसाइल पड़ुछि, ए रे भी 50 किलो न्यूटन टेंसाइल, सी रे 30 किलो न्यूटन टेंसाइल, बी रे कोन हमकु देखिया केते किलो न्यूटन कोन टेंसाइल पड़ुछि ना कंप्रेसिव पड़ुछि ना कोन पड़ुछि। ओके सो सिंप्लीफाई करिवा प्रॉब्लम को कोन ना देखो एपटे 50 किलो न्यूटन पड़ुछि हैला, तो 50 किलो न्यूटन जदि एठी पड़ुछि एपटे मझी रे केते पड़ुछि 20। धर आमे नेबा आगो सेक्शन ए बी, सेक्शन ए बी, सेक्शन ए बी, सेक्शन ए बी देखो बी रे केते पड़ुछि आमे धर एपटे नै जिबा एटा को टेंसाइल 20 किलो न्यूटन हैला फॉर सेक 20 किलो न्यूटन। तो एठी कम अछि एठी बेसी अछि, देखि पाछो एठी कम एठी बेसी अछि एठी कम अछि, ताले एई लोड टाको एई पटे सस्टेन करा जाय परिबो, किंतु एई लोड टाको एई पटे सस्टेन करि परिबो नाही हैला। this load can be sustained this side, but this 50 kilonewton can be sustained in this B point or B point, no it is not possible। so B point रो जो लोड टा अछि एठी केते ताको सस्टेन करिया पई एठी रहि जिवो केते 20 किलो न्यूटन हैला। तो बचिला एठी केते ना एठी हमर 50 थिला, बचिला केते 30 रिमेनिंग 30 किलो न्यूटन हां 20 किलो न्यूटन ऐसा सस्टेन हे गला। एबे बचिला केते ए बी रो हैला
20 किलो आउरी ए रे बची कौन 30 किलो न्यूटन बची तो बनाई दियो सी रे केते 30 दरकार 30 डेफिनेशन देखिबो 50 एपटे 50 लोड देख यार लोड भी टेंसाइली हबो ताले जाय कि ए लोड टाकू माने इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम रे एटा आसीबो माने समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस विल बी सेम और इक्वल टू 0 फॉर द sake of equilibrium तो that is the principle of superposition तो याडे 50 याडे 20 plus 30 50 तो ए रे बाकी रहला केते 30 किलो न्यूटन एट पॉइंट ए रिमेनिंग थिला तो एठी सी रे केते पडुची 30 हाँ 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 आसीबे जाउची हे गलानी तमर सरी गलानी 30 किलो न्यूटन आ एठी भी हे गला केते 30 किलो न्यूटन तो सिस्टम टा इक्विलिब्रियम रे आसी गला स्टैटिक इक्विलिब्रियम रे हला सो हमर लोड सस्टेन करी गला ताले हमें सेटा को डायरेक्ट कोन फार्मूला हिसाब रे लिखि देबा सीधा पुट कर दियो फार्मूला हिसाब रे ना चेंज इन लेंथ ऑफ द बार कोन हे जिवो del l इक्वल्स टू कोन 1 by AE into P1 L1 plus P2 L2 हैला तो वैल्यू पुट करो 1 by 200 into 10 to the power 3 into E केते सॉरी A केते देथिला A देथिला 200 mm स्क्वायर सो या को भी यार सो 200 मल्टीप्लाई करो इनटू P1 टा केते अछि P1 टा देछि ना P1 टा होछि हमर केते 20 किलो न्यूटन हमें एठी दउछु ना 20 किलो न्यूटन 20 into 10 to the power 3 लेंथ ता केते अछि हां मो क्वेश्चन रे लेंथ ता लेकिनि तमरो सॉरी एठी लेंथ गुडा दे दियो A to B लेंथ ता होछि केते A to B लेंथ ता होछि तमरो 300 mm आउ B to C तमरो लेंथ ता होछि केते 500 mm देखो दे डायमेंशन मुझे मेन जिसला छाडी देति तमरो डायमेंशन लेंथ ता ओके सो लेंथ हिसाब रे वेरी करिवो ना तमरो डिफॉर्मेशन ता सो लिखि दियो हे गला सरला तमरो प्रॉब्लम सरला कोन into 10 to the power 3 काली आउरी प्रॉब्लम करिवा हमें कोन ये रिलेटेड तमरो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आउरी क्लियर करिवा ताको हला तापर आकु बढ़िवा आ कंपोजिट सेक्शंस रो हमें प्रॉब्लम टा सॉल्व करिवा ओके एडा 30 into एटा लोड टा ना P2 टा 30 into 10 to the power 3 ओके into कोन लेंथ केते 800 हला मल्टीप्लाई करो एडिशन गणित करो गणित टा मु बतेबिनी आंसर टा मु लिखि दउची केते हबो रुह देखो आंसर लिखो पिला माने लास्ट 2 मिनट्स वी हैव आंसर टा बाहर करो सब तो सिंपलीफाई कर देजी तमर पई आंसर केते हबो जल्दी लिखो कलर चेंज कर दवा आंसर टा बाहरुची सब देखो एमएम रे ही बाहर करिवो सब जिनस एमएम रे बाहर करिवो किछि मीटर फीटर जदी मांगी थे वाला चला देखिवो जो दिन ट्राई करिवो एमएम रे करिया को हैला इजी हो तुमको सो आज रो क्लास एति की थैंक यू प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन fill the Google form and join the WhatsApp group क्लास करले मु तुम क्वेश्चन सब देबी हैला आज इदले कोन पड़ले स्मॉल रिकैप 1 मिनट वी हैव आज हमें बहुत जिंस पढ़ी दे आज हमें बहुत जिंस पढ़ी दे पिला माने टॉपिक्स तो डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट एक्टिंग ऑन इट तार डेरिवेशन तार गोटे प्रॉब्लम रिलेटेड हां ए प्रॉब्लम टा इंपोर्टेंट प्रॉब्लम वेरी इंपोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे पड़े स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन बार्स ऑफ कोन बेयरिंग सेक्शंस तार डेफिनेशन और तार डेरिवेशन टा हमें देखिले केमती हबो को फार्मूला यूज हबो हला फाइनल इक्वेशन टा कोन आ गोटे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रो प्रॉब्लम एटा
एटा कहार प्रॉब्लम लिखी दउची एठी तो माने फिर कंफ्यूज होवनी प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन रो प्रॉब्लम हैला क्लास हमर आज एठी शेष हैला हमर इलेक्ट्रिकल पिला मानकर तमर इलेक्ट्रिकल पिला मानकू तमर क्लास एबे स्टार्ट हबो ओके पाणीग्राही सर क्लास नेबे तमर ओके सो थैंक यू काली हमें फिर देखा हवा काली तो छुट्टी अछि हमर ताले काली हमें मॉर्निंग रे ट्राई करिवा क्लास करिया पई मॉर्निंग रे जदी हबो ताले 2 आवर्स कर दवा ओके सो थैंक यू आई डेट केते 17 ओके थैंक यू